Okay, so our last topic of this CS course, that is the cryptography. ठीक है, so आज हम cryptography पढ़ेंगे and after that आपका ये जो पूरा CS का कंटेंट है यार फिनिश हो जाएगा हमारा. ठीक है. ठीक है. So सबसे पहले हमारे पास क्रिप्टोग्राफी में इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टोग्राफी की हम बात करें. क्रिप्टोग्राफी होता क्या है, देखो हम स्टार्टिंग से इंक्रिप्शन चीजें सुनते हुए आ रहे हैं और हमें हर जगह इंक्रिप्शन देखने को मिलता है. लाइक इफ यू आर ओपन योर व्हाट्सएप एंड समथिंग, लाइक आप किसी को कॉल करते हो तो वहां पे आप देखते हो एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है ना. प्लस अगर आप व्हाट्सएप सेटिंग में जाके देखते हो वहां पे भी आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है. इवन अगर आप जीमेल वगैरह पे भी जाके देखते हो, किसी भी अनदर ऐप पे देखते हो तो वहां पे भी इंक्रिप्शन लिखा होता है. तो इंक्रिप्शन जब हमने डेटाबेस हैकिंग करी थी तब भी हमें, जब हमने एसक्यूएल मैप वगैरह यूज किया था या फिर हमने अपना एसक्यूएल इंजेक्शन यूज किया था, तब जब हमें डेटा मिल रहा था उसमें भी इंक्रिप्शन वर्ड आया था, है ना. तो इंक्रिप्शन हम काफी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं कि इंक्रिप्शन कोई चीज होती है, इंक्रिप्शन कोई चीज होती है जो डेटा हाइड के लिए या डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज करी जाती है. ठीक है. सो फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंक्रिप्शन थिंग्स. ठीक है. तो इंक्रिप्शन है क्या, पहले समझो. क्रिप्टोग्राफी एक वर्ड होता है, क्रिप्टोग्राफी प्रोसीजर है, टेक्निक है. क्रिप्टोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन इटसेल्फ. क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी जो है एक तरीके की फॉर्म है जिसमें इंक्रिप्शन से ही अपने आप से होता है. where a readable plain text formatted to converted is converted into the another form which does not leave the value of the plain text as it was before, but the basic difference will be the converted form will be readable by the human being but will be of no sense. यहाँ पे क्या है देखो कि अगर हम इंक्रिप्टेड अपना क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो क्रिप्टोग्राफी करता क्या है, प्लेन टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट जो होता है हमारा फॉर्मेट, उसको कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म में. ठीक है. जिसकी वैल्यू, लीव द वैल्यू ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, उसकी वैल्यू वहां से क्या होती है, चेंज हो जाती है, हमारी इंक्रिप्टेड हो जाती है. बट जब बेसिक डिफरेंस जो आता है वो क्या आता है कि ये जो टेक्स्ट हम कन्वर्ट करके देते हैं वो रीडेबल तो होता है किसी भी ह्यूमन के लिए, मतलब कोई भी अनदर ह्यूमन है वो उसे रीड कर सकता है, बट उसके मतलब का नहीं रह जाता. बिकॉज क्या होता है वहां पे वो इंक्रिप्ट होके उसकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाती है. ठीक है. तो उसे समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्या लिखा गया है. दिस इंक्रिप्शन टेक्निक इज यूज्ड मोस्टली फॉर सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ द डेटा. ये जो टेक्निक्स है ये ज्यादातर आपकी यूज करी जाती हैं किसके लिए, किसके लिए यूज करी जाती है, सिक्योरिटी के लिए, यानी सिक्योर करने के लिए डेटा को, एंड आपके डेटा को प्रॉपरली तरीके से उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए. ठीक है. सो जब मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह पढ़ाया तो बताया था डेटाबेस, उसके अंदर हम जितना भी डेटा यूज करते हैं वो सब इंक्रिप्शन प्रोसीजर में यूज करते हैं, ना. पासवर्ड्स वगैरह हम इंक्रिप्शन में सेव करते हैं ताकि हमारा डेटा का पासवर्ड कैसा रहे, सिक्योर रहे. राइट. यस सर. हाँ सर. वही चीज. तो फॉर दिस टेक्निक user have a encryption algorithm and a key or decryption. इसमें क्या होता है कि यूजर के पास एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होती है और उसकी एक की भी होती है जिसको हम क्या करते हैं, डिक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं. ठीक है. यूजर विल ट्रांसमिट दैट इंक्रिप्टेड मैसेज, रिसीवर विल रिसीव. क्या करता है यहाँ पे, यूजर जो है वो मैसेज को ट्रांसमिट, जो भी मैसेज है उसे इंक्रिप्ट करके भेजता है, इंक्रिप्टेड मैसेज भेजता है, जिसमें रिसीवर जो होता है उसे रिसीव करता है. नाउ द रिसीवर टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले रिसीवर को समझना होता है कि किस टाइप का यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया गया है, कौन सा इंक्रिप्शन यूज किया गया है. ही नीड्स टू कन्वर्ट इट इनटू प्लेन टेक्स्ट साइफर. फॉर दैट ही again need the key and the exact algorithm for the description. अब देखो रिसीवर ने रिसीव किया, अब उसे पहले समझना है कि कौन सा इंक्रिप्शन यूज किया गया है, प्लस उसके बाद जब वो समझ जाता है तो उसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, किस टेक्स्ट को, साइफर टेक्स्ट, जो कन्वर्टेड टेक्स्ट है उसे बोलते हैं साइफर टेक्स्ट. तो वो जो साइफर टेक्स्ट है उसे वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसे एक की नीड होती है, प्लस एग्जैक्ट एल्गोरिथम पता होनी चाहिए डिक्रिप्शन प्रोसीजर के लिए कि कौन सी यूज करी जाएगी. ठीक है. हाँ सर. तो इस केस में हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जैसे कि प्लेन टेक्स्ट हो गया, साइफर टेक्स्ट हो गया, इंक्रिप्शन हो गया एंड डिक्रिप्शन हो गया. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेन टेक्स्ट, अ टेक्स्ट व्हिच इज क्रिएटेड एंड रीडेबल बाय द इंडिविजुअल्स ओनली, लाइक ABCD 1 2 3 4 सिंबल्स, है ना, ये सारे क्या होते हैं, प्लेन टेक्स्ट है हमारे लिए, नॉर्मल. राइट. ओके. यस सर. अगर हम साइफर टेक्स्ट की बात करें, इट इज द encrypted text which is converted by applying
an algorithm on the plain text. साइफर टेक्स्ट क्या है? एक तरीके का इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसकी हेल्प से? अपने एल्गोरिथम की हेल्प से। किसमें कन्वर्ट करने के लिए? प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ओके। एन्क्रिप्शन क्या है इसके अंदर? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, दैट इज द प्रोसीजर इज बेसिकली कॉल्ड एज द एन्क्रिप्शन प्रोसीजर, and process of converting the cipher text to a plain text, this is the procedure called as a decryption procedure. ठीक है? Yes sir. Now, अब एक बात, हमने प्लेन टेक्स्ट तो पता है हमें कैसा होता है। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट किस तरीके के होते हैं? ठीक है, सो अगर हम साइफर टेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, so cipher text in cryptography process, cipher are those encrypted texts which came through the algorithm process of encryption. यानी कि साइफर एक तरीके का इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है जो यूज किया जाता है या हमें मिलता है कहां से? एल्गोरिथम प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ साइफर्स की बात करें तो हमारे पास कई टाइप के साइफर टेक्स्ट आते हैं, जैसे कि सीजर साइफर हो गया, हिल क्लाइंब साइफर हो गया, प्लेफेयर साइफर हो गया। आपने कॉन्सेप्ट, आप लोग ने बीटेक अगर कर रहे हो आप आईटी से या सीएससी से, तो आपको पता होगा कि इस टाइप के साइफर्स यूज करे जाते हैं। शायद आप लोग ने डीएस वगैरह में यूज करे होंगे। हाँ सर, पढ़े होंगे, है ना? CNS सर, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। हाँ, मतलब उसमें भी हो सकता है, उसी में हाँ होगा, सर। तो उसमें पढ़ा होगा, है ना? तो वहां हाँ पे सर। आपको बताया गया होगा कि साइफर्स होते हैं अलग अलग टाइप के। तो वही चीज है, सीजर साइफर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइफर व्हिच केम अक्रॉस विद द टेक्निक ऑफ एन्क्रिप्शन अ प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट। बहुत पुरानी टेक्निक है गाइस, बहुत पहले भी यूज होती थी एंड इवन एंड अभी भी यूज होती है। किस लिए? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हाँ सर। ओके। कैसे यूज करते हैं? सीजर साइफर वर्क्स बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 3 कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। अच्छा, या तो इसमें क्या होता है कि हम 3 प्लेसेस को या तो प्लस कर देते हैं या तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, दैट मींस इफ इन द प्लेन टेक्स्ट देयर इज अ कैरेक्टर e, either it will be transmitted to b, and if the character is a it will be transmitted to x। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लो, मैंने कहा मेरे पास जो पूरी की है वो क्या है? हमारे पास जो पूरे अल्फाबेटिक है वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड। आगे सारे, है ना? हाँ सर। अब जो मैसेज भेजना था वो तो था ये। ठीक है, जो मैसेज हमें ट्रांसमिट करना था वो था रचित। ठीक है, बट हम उसे भेजेंगे, ये कैसा है? प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, ये कैसा है? प्लेन टेक्स्ट है। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे साइफर टेक्स्ट का। तो साइफर टेक्स्ट में सबसे पहले हमें की चाहिए, है ना? तो की जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो हम यूज करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 प्लेसेस, यानी कि की हमारी क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्शन ऑफ 3। ठीक है, हाँ सर। ओके। सो अगर हम एडिशन भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अब देखो यहाँ पे आर कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसमें 3 माइनस करो, क्यू गया, पी गया, है ना? हाँ सर। हमारा क्या गया? आर गया, क्यू गया, पी गया, क्या बचा? ओ, वो है ना? तो क्या बच जाएगा? यस। ओ। ए की जगह पे क्या जाएगा? ए गया, जेड गया, वाई गया, क्या जाएगा? एक्स। ठीक है, फिर सी की जगह पे क्या जाएगा? ए बी गया, ए गया, जेड। फिर उसके बाद एच की जगह पे क्या जाएगा? एच गया, जी गया, एफ गया, बचा ई। ठीक है, आई की जगह पर आई एच जी एफ, तो हमारे पास मिल गया एफ। और टी की प्लेस पे जाएगा टी एस आर, जाएगा क्यू। सो गाइज, this is the encrypted या cipher text you can say that which is travel over the communication channel, and जिसके पास पहुंचेगा वो इसमें क्या करेगा? जब उसको की मिलेगी, तो कौन सी की मिलेगी?
उसको पता होगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ उससे किया गया है, तो फॉर डिक्रिप्शन दे आर यूजिंग एडिशन ऑफ 3, ठीक है। yes sir तो सब में क्या करेगा, एडिशन ऑफ 3 का यूज करेगा, 3 नंबर्स को ऐड करेगा, है ना। अब हाँ आर सर में क्यू ओ में 3 को ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या आर, तो क्या मिल जाएगा उसे, आर मिल जाएगा, है ना। हाँ सर। तो इस तरीके से क्या चलता है आपका साइफर टेक्स्ट चलता है। समझ में आया सीजर साइफर कैसा होता है? हाँ सर ओके सर कर लोगे, समझ गए ना। अब आप लोग ने ना कई बार देखा होगा कि पुराने जमाने के लोग जो होते थे ना, वो भी आपका साइफर्स यूज करते थे। वो जो डेटा सेंड करते थे इनसे क्या कहते हैं, पुरातत्कालीन नहीं, प्राचीन काल, प्राचीन काल, प्राचीन काल, चलो ठीक है प्राचीन काल बोलो। प्राचीन काल पुरातन में, काल हाँ क्या बोला, पुरातन काल हाँ पुरातन काल, ओके दिस इज राइट वर्ड। पुरातन काल में क्या होता था कि वहां पे जब आपके हमें क्या मिलते थे, कोई भी शिला वगैरह मिलती थी, कोई पत्थर मिलता था, तो उसपे ना कई डिजाइन बने होते थे, है ना, कुछ लिखा होता था। तो वो ना हाँ सर किसमें होता था, वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में होता था, साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। बट हाँ उस सर। टाइम पे जिसको नॉलेज थी केवल वही निकाल सकता था उसको। जैसे आज के टाइम में अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हो पुराने क्या नाम बता रहे यार, पुरातन पुरातन काल की, ठीक है। हाँ सर तो उस केस में वहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे जो कि अनसुलझे केसेस वगैरह के अपलोडेड वीडियोस होती है ना। तो आपको हाँ वहां सर पे इस टाइप की वीडियोस मिलती हैं देखने के लिए। तो वही चीज है, पहले जमाने से हमारे पास ये चीजें हैं, ठीक है। बट हम क्या ठीक करते हैं, हम उनको, वो किस में होते थे, डायग्राम्स वगैरह में होते थे, है ना, यस सर सिंबल्स में होते थे। अब हमारे पास क्या है, कंप्यूटर सिस्टम आ गया, तो उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंट वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर तो दिस साइफर एल्गोरिथम, सागर, okay, this cipher algorithm is having some mathematical equation which describe the functionality of the cryptographic process, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी की प्रोसेस को करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज किया जाता है। फॉर फर्दर एग्जांपल्स यू कैन ट्राई लाइक हिल क्लाइंब साइफर, प्ले फेयर साइफर, है ना। तो इफ यू आर गोइंग ऑन द यूट्यूब, या सॉरी इफ यू आर गोइंग ऑन द गूगल एंड यहाँ पे आप टाइप कर लो हिल क्लाइंब साइफर। हिल क्लाइंब एक गेम भी है ना। हाँ सर तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी, दैट वाज द geeks for geeks वेबसाइट। जस्ट ओपन दिस वेबसाइट, ओके। हिल क्लाइंब साइफर कैसे काम करता है ये देखो। यहाँ पे सबसे पहली बात, जितने भी मॉडुलो 26 का यूज किया जाता है, n by n मैट्रिक्स फॉर्मेट में होता है, एंड इसकी स्टार्टिंग जो होती है ना, वो 0 से लेके 25 तक होती है। कैसे, 0 से लेके 25 तक, ठीक है। यानी हाँ a सर की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, वैसे z की वैल्यू 26 की क्या है, 25 है। क्लियर? हाँ सर। यस सर बढ़िया। सो कैसे यूज किया जाता है देखो, दिस इज माय प्लेन टेक्स्ट जो क्या था, एक्ट ACT, एंड दिस इज द की जो वहां पे ट्रेवल कर रही है, जो की है इसे इंक्रिप्ट करने के लिए। और इंक्रिप्ट करने वाले से मिलता है POH, क्या मिलता है, POH, ठीक है। वैसे एक और है यस सर प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट एंड की। तो यहाँ पे क्या है, n, देखो इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 3 है। तो n कितना हो गया, हाँ सर 3, राइट। ठीक अब बाकी जो यस की मिली, हाँ की सर को आप क्या करो, एज इट इज, जैसे सेम आपके नंबर्स हैं उनके बेसिस पे लिख दो। तो जी का नंबर होता है अल्फाबेटिक में 7, बट 0 से स्टार्ट हो तो क्या नंबर मिलेगा, 6। वैसे y का होता है 25, बट क्या मिलेगा, 24, बिकॉज ऑफ 0 स्टार्टिंग है, एक एक कम हो जाएगा, n-1 पे हाँ चलेगा, सर है ना। b का होता है 2, AB हाँ 2 सर पे आता है, बट 0 से स्टार्ट है तो 1। वैसे n, q, k, u, r, p, ठीक है। हाँ सर लिख लिए हमने सारे, मैट्रिक्स बना ली।
अब n by n के मैट्रिक्स का सेम एज इट इज हम f के मैट्रिक्स बना लेंगे। तो a का 0, c का 2 एंड t का 19। क्लियर? हाँ अब आपको करना क्या है, दोनों मैट्रिक्स की इनटू करानी है। अब आपने मैथ्स पढ़ी होगी, है ना? तो मैथ्स में आपको पता होगा कि इसको उठाओ इसके साथ डालो, इसको उठाओ इसके साथ डालो, इसको उठाओ इसके साथ डालो और सबको ऐड करके यहाँ पे मैट्रिक्स बना लो, है ना? हाँ सर। फिर उसके बाद उसका मॉडलो निकाल लो 26 पर। ठीक है, तो ट्रांसपोज हमने उसको किया, ट्रांसपोज में मॉडलो जो हमने निकाला तो हमारे पास नंबर्स आ गए 15, 14 एंड 7। ठीक है, सो अगर हम 15 का प्लेस देखें तो क्या है P, 14 का प्लेस है O एंड 7 का प्लेस है H। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ हिल क्लाइंब साइफर। समझ में आया? हाँ सर। अब अगर बात करते हैं कि इसे डिक्रिप्ट करने की, तो डिक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम एज इट इज जो हमारे पास मैट्रिक्स थी हम उसी का यूज करेंगे दोबारा से, की का। ठीक है, -1 पे लगाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो हमारे पास जो लेटर्स मिलेंगे वो ये मिलेंगे। ठीक है, यस सर। मिल गए, इनकी मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। अब जो इसकी मैट्रिक्स बनी है उसमें हम करेंगे क्या, जो हमारे पास नया नंबर था, कौन सा नंबर था हमारे पास, जो POH था, उसके साथ हम इंटू करा देंगे। इंटू करने में उसका ट्रांसपोज ले लेंगे और हमें एग्जैक्टली नंबर मिल जाएगा, दैट इज 0 to 19। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू A, 2 इज इक्वल टू C एंड 19 इज इक्वल टू T। क्लियर? यस सर। दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू कन्वर्ट इट। अब इसके लिए अगर आप C का कोड देखना चाहते हो तो इसने यहाँ पे C का कोड भी दिखा रखा है। इफ यू वांट टू जावा कोड तो जावा कोड भी दिखा रखा है। पाइथन सीख रहे हो तो पाइथन कोड देख लो, एंड C हैश सीख रहे हो तो C हैश का कोड देख लो। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया? यस सर। बढ़िया। नेक्स्ट होता है इसके बाद हमारा हिल क्लाइंब साइफर के बाद है हमारा प्ले फेयर साइफर। तो देखो प्ले फेयर साइफर से भी एग्जांपल दे रखे हैं, देख लो कितने सारे साइफर के वो लिखे थे टाइप्स। हाँ सर। सो प्ले फेयर साइफर देखो कैसे काम करता है, समझ लो। जैसे कि है हमारे पास मोरिची, ठीक है, मोनारिची, और हमारे पास प्लेन टेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो हम दो का सेट बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास की है उसको तो हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, एक एक अलग अलग कैरेक्टर्स। बाकी जो हमारे इन सबको हम लिख देंगे एक पूरे बॉक्स में, जिसमें जे का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जे को हम हाँ क्या सर। करते हैं, एक्सपेक्ट जे इन दैट ऑर्डर हम हटा देते हैं A to Z में। ठीक, सो इस केस में 26 होते हैं, तो पूरे आप यहाँ पे बनाओगे तो आपके सारे अल्फाबेटिक आ जाएंगे। पहले हमने MONERCHY लिख दिया, देन उसके बाद हम BDEFGIK जो अल्फाबेटिक बच रहे हैं हमारे पास लाइन से ABCD के रेंज में, हम वो सारे Z तक लिख देंगे। ठीक है, फिर हाँ सर। उसके बाद क्या है, एल्गोरिथम कैसे काम करेगी, जो इंस्ट्रूमेंट था प्लेन टेक्स्ट उसको हम डिवाइड करेंगे दो के पार्ट में। तो इफ यू आर डिवाइडेड दैट प्लेन टेक्स्ट इनटू टू सेक्शंस लाइक IN। अच्छा, अगर लास्ट में हमारे पास केवल क्या बचता है, S बचता है, ठीक है, तो उसके साथ हम ऐड कर देंगे Z। जो लास्ट वाला होगा, अगर हमारे पास ऑड में नंबर बन रहे हैं, इवन में नहीं बन रहे, तो हम लास्ट वाले को Z के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, हाँ सर। नाउ उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले मी आता है। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या है हमारे पास, हमने मी को उठाया, ME को, तो ME को सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, CL, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट क्या होगा, CL। कैसे, पहले चलेगा टॉप बॉटम में, कैसे चलेगा, टॉप टू बॉटम। टॉप बटन। टॉप टू बॉटम में हमने क्या, M यस का सर। रिलेटेड वर्ड है C और E का रिलेटेड वर्ड है L, तो CL हो गया। फिर उसके बाद चलेगा लेटर कैसे, सेम रोज में, यानी कि लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट में हाँ सर। L जो हमारा क्या था, TL। ठीक है, तो T का अगला क्या होगा, L, एंड S का क्या होगा अगला, T। ठीक है, टी।
यस मिल गया। फिर उसके बाद चलेगा क्रॉस में, ठीक है, कैसे, क्रॉस लेटर्स में। तो n का क्रॉस क्या मिलेगा, n और t यहाँ है, तो n का जो हमारे पास क्रॉस पे आएगा वो आएगा r, और जो q का t का क्रॉस आएगा वो आएगा q, ठीक है। हाँ फिर सर इसी तरीके से हम बाकी सबका बना लेंगे, देखो ये बना रखा है। यस सर नाउ मेवा बन गया इंक्रिप्टेड टेक्स्ट, है ना। अब ये उसकी एल्गोस डिक्रिप्ट करने के लिए सेम मोनार्ची वैसे ही लिखना है, जो हमारे पास नया लेटर है उसको डिवाइड करो, उसके लेटर्स बनाओ, सेम एज इट इज जो हमने लास्ट टाइम पे किया था उसी तरीके से उसे क्या करो, डिक्रिप्ट कर लो। क्लियर। हाँ यस सर सर। हाँ सर। So guys, this is the ciphertext procedure. You can learn at least 10 cipher. आपको 10 तरीके, अगर आप क्रिप्टोग्राफिक फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो एंड इन फ्यूचर आप इसी फील्ड में जॉब करना चाहते हो, so you have to learn at least minimum of 10 ciphers. आपको 10 तरीके के जो ciphers हैं वो तो पता होने ही चाहिए, ठीक है। हाँ सर तो आप यहाँ हाँ से सर देख सकते हो, उन्हें पढ़ सकते हो, या वेरी सिंपल प्रोसीजर्स। बस आपको अगर मैथमेटिकल की नॉलेज है तो आप इजीली देख के समझ जाओगे, उसे यूज कर पाओगे। क्लियर। यस सर ठीक है सर। बढ़िया। Okay, next, when we talk about the algorithm of these encrypted algorithms, encryption algorithm, these are the types of standards of modulation on which the encryption is going on, like AES, Advanced Encryption Standard, DES, Data Encryption Standard, and RSA, that is a Reversed Shamir Edelman, एक्सेट्रा। ये जो था RSA, ये बहुत पहले यूज होता था, अभी भी कई जगह पे यूज होता है, बट अब जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, AES, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो आपको याद होगा कि आपने वाईफाई किया था तो AES का नाम आया था, है ना। यस हाँ सर। सर बढ़िया। चलो, अब ये तो हो गया इंक्रिप्शन की बात। अब हमारे पास जो इंक्रिप्शन होता है उसमें कीज आ रही है कहीं पे, वर्ड की है ना। तो कीज की बात कर लेते हैं। कीज हाँ हमारे पास दो टाइप की होती हैं। पहली की होती है, इसे बोलते हैं की सिस्टम्स में असिमेट्रिक की, जिसे हम पब्लिक कीज बोलते हैं, और दूसरी होती है सिमेट्रिक कीज, जिन्हें हम प्राइवेट कीज बोलते हैं, ठीक है। So, हाँ अगर हम की सिस्टम की बात करें, a cryptography key is that bit used of data which are used by the cryptographic algorithm for converting plain text into a cipher text or the vice versa. तो इसमें क्या है कि आपके क्रिप्टोग्राफी में प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए या साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें की नीड होती है। तो वो कीज क्या है, दो टाइप की हैं। पहली है सिमेट्रिक की, जिसे पब्लिक की भी बोलते हैं, दूसरी है आपकी असिमेट्रिक की, जिसे प्राइवेट की भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझ यस लेते हैं क्या होता है। अच्छा, हाँ एक सर। चीज याद रखो, पहले जो यूज होती थी वो सिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स यूज होती थी, ठीक है। जैसे कि एक ताले की अगर मैं बात करूं, तो जो ताला आपके घर में आपने लगाया, उसकी अगर चाबी है, जो चाबी है ओरिजिनल, केवल आप उसी से उसे खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, है ना। तो वो होता था प्राइवेट हाँ की सर हाँ एंक्रिप्शन, सर ठीक है। बट अब यूज किया जाता है असिमेट्रिक, जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों होते हैं, ठीक है। तो असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम कॉल्ड पब्लिक की एल्गोरिथम यूज टू डिफरेंट की रिलेटेड टू एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, बट पब्लिकली प्रोवाइड बाय द वेब सर्वर। तो कैसे होती है, लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosts. Encryption is the process of taking a message and scrambling its contents so that only certain people can look at your message. There are two types of encryption, symmetric and asymmetric encryption. Let's first take a look at symmetric encryption to understand why asymmetric encryption was created. To do that, let me introduce you to Alice and Bob. Alice has a sensitive document that she wants to share with Bob. She uses an encryption program to protect her document with a password or passphrase that she chooses. She then sends the encrypted document to Bob. However, Bob cannot open this message because he doesn't know the passphrase that Alice used to encrypt the document.
In other words, he doesn't have the key to open the lock. Now comes a real problem. How does Alice share this passphrase securely with Bob? Sending it through email is risky because others might find the passphrase and use it to decrypt any messages between Alice and Bob. Guys, Yes, हाँ sir. सर. This is exactly the kind of problem that asymmetric encryption intends to solve. It is comparable to a mailbox on the street. The mailbox is exposed to anyone who knows its location. We can say that the location of the mailbox is completely public. Anyone who knows the address can go to the mailbox and drop in a letter. However, only the owner of the mailbox has a key to open it up and read the messages. So let's now go back to technical details. When using asymmetric encryption, both Alice and Bob have to generate a key pair on their computers. A popular and secure way for doing this is by using the Rsa algorithm. This algorithm will generate a public and private key that are mathematically linked to each other. Public keys can be used to encrypt data, and only the matching private key can be used to decrypt it. Even though the keys are linked together, they cannot be derived from each other. In other words, if you know someone's public key, you cannot derive his private key. If we retake our mailbox example, then the mailbox's address would be the public key, something that everyone is allowed to know. The owner of the mailbox is the only one who has the private key, and that is needed to open up the mailbox. Let's now take a look at how Alice and Bob can use asymmetric encryption to communicate securely with each other. They start by exchanging their public keys. Bob gives his public key to Alice, and Alice gives her public key to Bob. Now Alice can send her sensitive document again. She takes the document and encrypts it with Bob's public key. She then sends the file to Bob, who uses his private key to unlock the document and read it. Because they use asymmetric encryption, only Bob is able to decrypt the message. Not even Alice can decrypt it because she doesn't have Bob's private key. The strength and security of the asymmetric encryption now relies on Alice and Bob to keep their private keys well protected. If an attacker steals Alice's private key, it can be used to decrypt all messages that are intended for Alice. However, the attacker cannot decrypt messages that were sent by Alice because that requires Bob's private key. Asymmetric encryption is used in a lot of places where security really matters. You might not be aware of it, but every time you visit a secure website via HTTPS, you're actually using asymmetric encryption. It's also being used to securely send emails with the PGP protocol. And one last example, Bitcoin also uses asymmetric encryption to make sure that only the owner of a money wallet can withdraw or transfer money from it. So now you know how asymmetric encryption works and what the differences are between asymmetric and symmetric encryption. If you like this video, consider supporting me by sharing it and subscribing to my YouTube channel. सर मैं आया. Yes, sir. ओके. अब पब्लिक की आरएसए इंक्रिप्शन के साथ कैसे यूज होती थी ये समझते हैं. Okay, sir. After failing for 6 times, I got a job offer from one of the largest companies in the world. Up until the 1970s, cryptography had been based on symmetric keys. That is, the sender encrypts the देखो ये है सिमेट्रिक की. message using a specific key, and the receiver decrypts using an identical key. As you may recall, encryption is a mapping from some message using a specific key to a ciphertext message. To decrypt the ciphertext, you use the same key to reverse the mapping. So for Alice and Bob to communicate securely, they must first share identical keys.
However, establishing a shared key is often impossible if Alice and Bob can't physically meet, or requires extra communications overhead when using the Diffie-Hellman key exchange. Plus, if Alice needs to communicate with multiple people, perhaps she's a bank, then she's going to have to exchange distinct keys with each person. Now she'll have to manage all of these keys and send thousands of messages just to establish them. Could there be a simpler way? In 1970, James Ellis, a British engineer and mathematician, was working on an idea for non-secret encryption. It's based on a simple yet clever concept. Lock and unlock are inverse operations. Alice could buy a lock, keep the key, and send the open lock to Bob. Bob then locks his message and sends it back to Alice. No keys are exchanged. This means she could publish the lock widely and let anyone in the world use it to send her a message. And she now only needs to keep track of a single key. Ellis never arrived at a mathematical solution, though he had an intuitive sense of how it should work. The idea is based on splitting a key into two parts, an encryption key and a decryption key. The decryption key performs the inverse or undo operation, which was applied by the encryption key. To see how inverse keys could work, let's do a simplified example with colors. How could Bob send Alice a specific color without Eve, who is always listening, intercepting it? The inverse of some color is called a complementary color, which when added to it produces white, undoing the effect of the first color. In this example, we assume that mixing colors is a one-way function because it's fast to mix colors and output a third, and it's much slower to undo. Alice first generates her private key by randomly selecting a color, say red. Next, assume Alice uses a secret color machine to find the exact complement of her red, and nobody else has access to this. This results in cyan, which she sends to Bob as her public key. Let's say Bob wants to send a secret yellow to Alice. He mixes this with her public color and sends the resulting mixture back to Alice. Now, Alice adds her private color to Bob's mixture. This undoes the effect of her public color, leaving her with Bob's secret color. Notice Eve has no easy way to find Bob's yellow since she needs Alice's private red to do so. This is how it should work. However, a mathematical solution was needed to make this work in practice. The solution was found by another British mathematician and cryptographer, Clifford Cox. Cox needed to construct a special kind of one-way function called a trapdoor one-way function. This is a function that is easy to compute in one direction, yet difficult to reverse unless you have special information called the trapdoor. For this, he turned to modular exponentiation, which we introduced as clock arithmetic in the Diffie-Hellman key exchange, as follows. Take a number, raise it to some exponent, divide by the modulus, and output the remainder. This can be used to encrypt a message as follows. Imagine Bob has a message which is converted into a number, m. He then multiplies his number by itself e times, where e is a public exponent. Then he divides the result by a random number n and outputs the remainder of the division. This results in some number c. This calculation is easy to perform. However, given only c, e, and n, it is much more difficult to determine which m was used because we'd have to resort to some form of trial and error. So this is our one-way function that we can apply to m, easy to perform but difficult to reverse. It is our mathematical lock. Now, what about the key? The key is the trapdoor.
some piece of information that makes it easy to reverse the encryption. We need to raise C to some other exponent, say D, which will undo the initial operation applied to M and return the original message M. So both operations together is the same as M to the power of E, all raised to the power of D, which is the same as M to the power of E times D. E is the encryption, D is the decryption. Therefore, we need a way for Alice to construct E and D, which makes it difficult for anyone else to find D. This requires a second one-way function which is used for generating D. And for this, he looked back to Euclid. Over 2,000 years ago, Euclid showed every number has exactly one prime factorization, which we can think of as a secret key. It turns out that prime factorization is a fundamentally hard problem. Let's clarify what we mean by easy and hard by introducing what's called time complexity. We have all multiplied numbers before, and each of us has our own rules for doing so in order to speed things up. If we program a computer to multiply numbers, it can do so much faster than any human can. Here is a graph that shows the time required for a computer to multiply two numbers. And of course, the time required to find the answer increases as the numbers get larger. Notice that the computation time stays well under 1 second, even with fairly large numbers. Therefore, it is easy to perform. Now compare this to prime factorization. If someone told you to find the prime factorization of 589, you will notice the problem feels harder. No matter what your strategy, it will require some trial and error until you find a number which evenly divides 589. After some struggle, you will find 19 times 31 is the prime factorization. If you were told to find the prime factorization of 437,231, you'd probably give up and get a computer to help you. This works fine for small numbers, though if we try to get a computer to factor larger and larger numbers, there is a runaway effect. The time needed to perform the calculations increases rapidly as there are more steps involved. As the numbers grow, the computer needs minutes, then hours, and eventually it will require hundreds or thousands of years to factor huge numbers. We therefore say it is a hard problem due to this growth rate of time needed to solve it. So factorization is what Cox used to build the trapdoor solution. Step 1. Imagine Alice randomly generated a prime number over 150 digits long. Call this P1. Then a second random prime number roughly the same size. Call this P2. She then multiplies these two primes together to get a composite number n, which is over 300 digits long. This multiplication step would take less than a second. We could even do it in a web browser. Then she takes the factorization of n, P1 times P2, and hides it. Now, if she gave n to anyone else, they would have to have a computer running for years to find the solution. Step 2. Cox needed to find a function which depends on knowing the factorization of n. For this, he looked back to work done in 1760 by Swiss mathematician Leonhard Euler. Euler continued to investigate properties of numbers, specifically the distribution of prime numbers. One important function he defined is called the Phi Function. It measures the breakability of a number. So given a number, say n, it outputs how many integers are less than or equal to n that do not share any common factor with n. For example, if we want to find the phi of 8, we look at all values from 1 to 8. Then we count how many integers 8 does not share a factor greater than 1 with. Notice 6 is not counted because it shares a factor of 2, while 1, 3, 5, and 7 are all counted because they only share a factor of 1. Therefore, phi of 8 equals 4. What's interesting is that calculating the phi function is hard except in one case. Look at this graph. It is a plot of values of phi over integers from 1 to 1,000. Now, notice any predictable pattern. The straight line of points along the top represent all the prime numbers. Since prime numbers have no factors greater than 1, the phi of any prime number, p, is simply p minus 1.
To calculate phi of 7, a prime number, we count all integers except 7, since none of them share a factor with 7. Phi of 7 equals 6. So if you're asked to find phi of 21,377, prime number, you would only need to subtract 1 to get the solution, 21,376. Phi of any prime is easy to compute. This leads to an interesting result based on the fact that the phi function is also multiplicative. That is, phi a times b equals phi a times phi b. If we know some number n is the product of two primes, p1 and p2, then phi of n is just the value of phi for each prime multiplied together, or p1 minus 1 times p2 minus 1. We now have a trapdoor for solving phi. If you know the factorization for n, then finding phi n is easy. For example, the prime factorization of 77 is 7 times 11. So phi of 77 is 6 times 10, 60. Step 3, how to connect the phi function to modular exponentiation. For this, he turned to Euler's theorem, which is a relationship between the phi function and modular exponentiation as follows. M to the power of phi n is congruent to 1 mod n. This means you can pick any two numbers such that they do not share a common factor. Let's call them m and n. Say m equals 5 and n equals 8. Now, when you raise m to the power of phi n, 4, and divide by n, you will always be left with 1. Now, we just need to modify this equation using two simple rules. First, if you raise the number 1 to any exponent k, you always get 1. In the same way, we can multiply the exponent phi n by any number k, and the solution is still 1. Second, if you multiply 1 by any number, say m, it always equals m. In the same way, we can multiply the left side by m to get m on the right-hand side. And this can be simplified as m to the power of k times phi n plus 1. This is the breakthrough. We now have an equation for finding e times d, which depends on phi n. Therefore, it's easy to calculate d only if the factorization of n is known. Meaning d should be Alice's private key. It's the trapdoor which will allow her to undo the effect of e. Let's do a simple example to see all of this in action. Say Bob has a message he converted into a number using a padding scheme. Let's call this m. Then Alice generates her public and private key as follows. First, she generates two random prime numbers of similar size and multiplies them to get n, 3,127. Then she calculates phi of n easily since she knows the factorization of n, which turns out to 3,016. Next, she picks some small public exponent e, with the condition that it must be an odd number that does not share a factor with phi n. In this case, she picks e equals 3. Finally, she finds the value of her private exponent d, which in this case is 2 times phi of n plus 1 divided by 3, or 2,011. Now, she hides everything except the value of n and e, because n and e make up her public key. Think of it as an open lock. She sends this to Bob to lock his message with. Bob locks his message by calculating m to the power of e mod n. Call this C, his encrypted message, which he sends back to Alice. Finally, Alice decrypts his message using her private key, D, accessed through her trapdoor. C to the power of D mod n equals Bob's original message M. Notice that Eve, or anyone else with C, N, and E, can only find the exponent D if they can calculate phi n, which requires that they know the prime factorization of n. If n is large enough, Alice can be sure that this will take hundreds of years even with the most powerful network of computers.
This trick was immediately classified after its publication. However, it was independently rediscovered in 1977 by Ron Rivas, Adi Shamir, and Len Edelman, which is why it's now known as RSA encryption. RSA is the most widely used public key algorithm in the world and the most copied software in history. Every internet user on Earth is using RSA or some variant of it, whether they realize it or not. Its strength relies on the hardness of prime factorization, which is a result of deep questions about the distribution of prime numbers, a question which has remained unsolved for thousands of years. तो समझ में आया गाइस? हाँ सर। थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, है ना? यस सर। चलो कोई नहीं, आराम से देखना, समझ में आएगा। असिमेट्रिक की पढ़ लेते हैं। सिमेट्रिक की, असिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम यूज द सिंगल सिमेट्रिक की फॉर बोथ एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड इज द प्राइवेट क्या। तो हम समझ चुके हैं कैसे होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द स्टेगनोग्राफी। अब बात करते हैं स्टेगनोग्राफी की। स्टेगनोग्राफी वर्ड सुना सुना सा लग रहा है? यस सर। Yes, sir. स्टेगनोग्राफी आपने सुनी होगी। पहले के जो पुरातनकालीन, नहीं क्या यार, पुरातन काल पुरातन काल के जो लोग होते थे वो क्या काम करते थे? वो पहले अपने जो डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए या डेटा को हाइड करने के लिए क्या करते थे? सिंबल्स का और चित्र का यूज करते थे, है ना? वैसी है स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी आर बेसिकली हाइड द डेटा इनसाइड द डेटा। किसी भी एक डेटा के पीछे हम दूसरे डेटा को हाइड कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस इन व्हिच द डेटा इज हिडन इनटू द प्लेन साइड और इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल किसी के पीछे भी। This process can also be along with the cryptography as an extra secure method in which to protect data. One of the most famous and simplest technique is steganography is least significant bit technique, also known as a LSB. ठीक है? तो कैसे करते हैं? इसके लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो दो इमेजेस चाहिए। Let's come to the main page. यहाँ पे देखते हैं कोई इमेज है, नहीं है, तो let's download the image first. तो मैं यहाँ पे इमेजेस ले लेता हूँ .jpg, ठीक है? यस सर। तो मिनियंस ले सकते हैं हम, नहीं तो पांडा ले सकते हैं। चलो लेट अस सपोज वी आर टेकिंग अ इमेज ऑफ पांडा, ठीक है? सेव कर लेते हैं इसे। ये वाला चाहिए क्या पांडा? डेस्कटॉप पे website.jpg है, हम इसे नाम देते हैं पांडा दे देते हैं, जेपीजी अपने आप लग जाएगा, है ना? यस सर। ओके करा मैंने, फाइल सेव हुई। लेट्स कम टू द डेस्कटॉप। panda.jpg आ गई, है ना? अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, किस नाम से? लोकली किसी भी नाम से ले लेते हैं टेक्स्ट फाइल और उस टेक्स्ट फाइल का नाम रख देते हैं file1.txt। फाइल को ओपन किया, फाइल के अंदर एक डेटा कुछ लिख देते हैं। नोटपैड की फाइल है नॉर्मली हमारी, मैंने लिख दिया हेलो यूजर यू आर माई नेक्स्ट टारगेट, ठीक है? ठीक है सर। क्लियर? मैंने लिख दिया है मैसेज, ठीक। अब इसको सेव कर देते हैं, बस सेव कर दो। नाउ अब आते हैं अपने CMD पर। CMD पे आना है आपको, कमांड का यूज करना है। पहले CD डेस्कटॉप कर लेते हैं। CD डेस्कटॉप पे आ गए। नाउ अब हमें क्या करना है? यहाँ पे यूज करना है कॉपी /b, बाइंड करो। किसको बाइंड करना है? पहली इमेज का नाम देते हैं, जैसे कि पहला हमारी क्या है?
कॉपी स्लैश बी, पहली इमेज का नाम, फिर txt और नई वाली फाइल का नाम, ठीक है। सो हमारी इमेज का नाम है पांडा, राइट, पांडा डॉट jpg स्पेस, सॉरी स्पेस से प्लस का साइन लगाओ और यहाँ पे लिखो दूसरे फाइल 1.txt, ठीक है, और इसे सेव कर दो किस नाम से, क्यूब पांडा .jpg, ठीक है। नाउ प्रेस एंटर किया, वन फाइल कॉपीड हो गई, दिख रही है। चलो इस पे आओ, यहाँ पे देखो दो, एक क्यूब पांडा बन गया और एक पांडा बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इस पे इसका जो कोड है वो ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ओपन विद नोटपैड, है ना। तो देखो इसका कोड ओपन हो गया आया, जस्ट स्क्रॉल डाउन, लेट्स सी, सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो मैसेज दिख रहा है, हेलो यूजर यू आर माई नेक्स्ट टारगेट, लिखा हुआ है। हाँ सर। Yes, sir. कैसे लिखा है, बिकॉज हमने क्या किया यहाँ पे, यूज किया, क्या यूज किया, अपना प्रोसीजर, कौन सा, जिसके द्वारा हमने क्या किया यहाँ पे, निकाला है कि क्या क्या वहां पे हमें मिल रहा है, ठीक है। अपना टारगेट हमने वहां पे सेट किया, ठीक है। अब देखो इमेज को हमने हाइड कर दिया यहाँ से, इमेज के पीछे डेटा को, Yes, sir. ठीक। अब आप कहोगे कि ये काम तो मैं ऐसे भी कर लेता, इसमें ऐड कर देता जाके, है ना। तो एक काम करते हैं, फिर हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से इस टेक्स्ट को। किसी के माइंड में आ रहा है कि हम ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं जाके, Yes, sir. तो ऐड करते हैं नोटपैड, नीचे गए, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। सेम एज इट इज, कंट्रोल एस, सेव कर दिया। नाउ देखो क्या इस इमेज का आपको ये दिख रहा है पाथ, क्या आइकन दिख रहा है, आइकन गायब हो गया। चलो इस इमेज को ओपन करता हूँ, नॉर्मली इमेज हो रही है ओपन, है ना। अब इस वाली को ओपन करते हैं, देखो क्या लिख के आ रहा है, कैन यू सी द मैसेज गाइस, हाँ सर। क्या दिख रहा है, We can't open this file. नहीं कह रहा ना, कह रहा ना नहीं हम ओपन कर सकते। हाँ सर। ये प्रोसीजर होता है कि अगर आपने नॉर्मल डेटा ऐड किया उसके अंदर तो क्या होगा, और अगर आपने इंक्रिप्शन मतलब आपने स्टेगनोग्राफी का यूज करके किया तो आपका क्या होगा। प्लस अभी जैसे मैंने प्लेन टेक्स्ट में भेजा है, अगर यही सोचो मैं हैशेस में या इंक्रिप्शन टेक्स्ट में भेज दूं तो क्या किसी को देखने में पता चलेगा कि इसके अंदर कोई इमेज किसी टाइप का कोड भी है, No, sir. पता चलेगा ना। तो दिस इज द थिंग गाइस, कि आप कैसे उसे रन करा सकते हो। समझ में आया। हाँ सर। बढ़िया, तो आप इसे यूज करना, मैं इसको देता हूँ। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसको कर दो क्लोज। पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हैशेस। नाउ हैशेस क्या होते हैं ये समझ लो, हैशेस किस तरीके से काम करते हैं।
It converts data into either alphanumeric form in the hex form, but there is a difference between a cipher encryption and the hashes. देखो हमारे पास हैश में और साइफर टेक्स्ट में एक ही डिफरेंस है. आप हैश को आप एक साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हैश कभी भी डिक्रिप्ट नहीं होता है. हैश हमेशा मैच किया रहा जाता है, समझे? The difference in encrypted text can be reverted but further decrypted, है ना, and further decrypted but hash cannot be reverted. हैश कभी भी रिवर्ट बैक नहीं होते, एक बार बन गए तो बन जाते हैं. उसको रिवर्ट बैक करने का तरीका होता है कि आप नए हैश के साथ उस हैश को मैच कराओ, ठीक है. अगर वो हैश टू हैश मैच करता है तो वो क्या करेगा, आपको मैच हैश ला के देगा और उसका आप वहां पे डेटाबेस में नाम देख सकते हो रिजल्ट क्या था. यानी कि आपकी जो पासवर्ड सीरीज है, जैसा आप फेसबुक पे पासवर्ड डालते हो लॉगिन के लिए, तो सबसे पहले वो पासवर्ड को क्या करता है, हैश में कन्वर्ट करता है. किसमें कन्वर्ट करता है? हैश में. वहां पे जो ऑलरेडी सेव्ड हैश है उसके साथ मैच कराता है. अगर दोनों हैश मैच करते हैं तो आपको लॉगिन दे देता है, अदरवाइज आपको लॉग आउट कर देता है. यानी क्या देता है, यू आर इनकरेक्ट, पुटिंग द इनकरेक्ट पासवर्ड, है ना. हो जाता है हमारे पास. तो ये तरीका होता है हैशेस का. We need to crack the hash. So hash function is that which takes as an input and return a fixed size alphanumeric string. The string is called the hash value. Example: MD5 hash, base 64 hash, encoding etc etc like SHA1 hash, SHA256 hash. बहुत सारे टाइप के हैशेस होते हैं, ठीक है. अब जैसे कि ये कोई अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग है, आप इसको हैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो पहले हैश देखते हैं कि हैश हमारे पास कितने कैसे हम यूज कर सकते हैं. तो लेट्स कम टू द, यहाँ पे आप आओ. जैसे MD5 हैश की बात करते हैं. MD5 हैश डिक्रिप्टर की जगह जनरेटर, ठीक है. वेबसाइट मिली, ओपन कर लो. मैं यहाँ पे हैश डालता हूँ जो मुझे जनरेट करना है. मैंने यहाँ पे लिखा RACHIT, ठीक है, और किया जनरेट. तो देखो इसने मुझे हैश जनरेट करके दिया. ये किस टाइप का हैश है? MD5, ठीक है. हाँ सर. अब अगर मैं इसका डिक्रिप्टर यूज, यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के कन्वर्जन इनकोडर्स हैं. बेस 64, अगर यही चीज मैं अपने किस में करता हूँ, SHA1 में क्रिएट करता हूँ, ठीक है. सेम. क्या बात है, काम नहीं करता. अरे 256 पे ट्राई करके देखते हैं. मैंने यहाँ पे हैश डाला, ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा RACHIT रचित और जनरेट हैश. तो देखो इसने मुझे एक हैश जनरेट करके दिया. इट इज लुक टू सीम्स लाइक किस तरीके का दिख रहा है, MD5 तरीके का दिख रहा है, बट एग्जैक्टली इट इज ए SHA256 हैश. ओके, नेक्स्ट अगर हम ट्राई करते हैं यहाँ पर किसका हैश, 512 का हैश ट्राई करके देखते हैं. Create hash. Now look at this. दिख रहा है कितना बड़ा हैश है? हाँ सर. फिर ऐसे ही और भी हैशेस हैं, हम बाकी ट्राई कर सकते हैं. URL इनकोड और डिकोड कर सकते हो आप. आपको किसी URL को इनकोड कराना है, ठीक है. तो जैसे मैं दे देता हूँ http://www.example.com, ठीक है, और इनकोड द URL. तो देखो ये कन्वर्ट करके दिया इसने, ठीक है. और क्या है इसके पास, हमारे पास बेस 64 है, डिकोडर है. अच्छा तो बेस 64 का पहले इंपोर्ट कर लेते हैं. बेस 64 इंकोडर. तो मैंने यहाँ पे लिखा RACHIT रचित बेस 64 इंपोर्ट. तो देखो कितना छोटा सा बना के दिया है ना. अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जो इसने बना के दिया है, और यहाँ पे चले जाते हैं इसमें डिकोड में, है ना. यहाँ पे वो टाइप कर देते हैं. नाउ डिकोडेड मिल गया मेरे को, है ना.
तो ये होते हैं इनकोड एंड डिकोड के प्रोसीजर जिनका हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ठीक है सर। कन्वर्जन्स में चले जाओगे, डेटा कन्वर्जन CSV टू HTML अलग अलग टाइप के होते करते हैं। देख लो, तो आई होप कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके के होते हैं, है ना? हाँ सर। सर एक छोटी सी वीडियो तो हमें और एक्सप्लेन करेगी। What is hashing and what does it do? Hashing is the process of converting the input of any length into a fixed size string of text using a mathematical function. This means that any text, no matter how long it is, can be converted into an array of numbers and letters through an algorithm. The message to be hashed is called input. The algorithm used to do so is called a hash function, and the output is called hash value. There are many formulas that can be used to hash a message, but a cryptographic hash function needs to have some qualities to be considered useful. Each hash value or output has to be unique. This means that it should be impossible to produce the same hash value entering different inputs, and therefore the same message should always produce the same hash value. The hashing speed is also an important factor. A hash function should be quick to produce a hash value. Finally, a hash function needs to be secure. It is extremely difficult, if not impossible, to determine the input based on the hash value, while the slightest change to an input should generate a hugely different hash. In blockchain, hashes are used to represent the current state of a blockchain and to ensure its immutability. Every transaction contains certain bits of information, such as the amount being sent, the sending and receiving addresses, the timestamp, and so on. All of this information is combined into the formula to produce a hash called transaction ID. The transaction ID is a hash value that can be used to identify and confirm that a transaction has happened. The first block in a blockchain, known as a genesis block, contains transactions that, when combined, produce a unique hash. When the second block is created, the hash of the genesis block is added to all of the new transactions in the new block. This combination is used to create its respective hash. This process is repeated with all the new blocks being added to a blockchain, always taking previous hashes to generate the newer ones, creating an unbreakable dependency. This way, each block links back to its previous block through its hash, forming a chain back to the genesis block, which makes blockchain a secure, immutable, and transparent network. समझ में आया गाइस? हाँ सर। बढ़िया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, cracking methods of hashes. So we have to create a dictionary to have converted every word into the hash of a particular word list, and after that we will compare it particular hash. It means that a specific word is found. Hash are usually unique. हर तरीके के hash unique होते हैं. So let's see क्या procedure है cracking का. Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosting is. You might have found out that there is a website that checks if your online accounts have been compromised by hackers. So you enter in your email address and oh no, you have been pwned. Hackers now know the passwords that you used on all these services. But do they really know your password? Well, as it turns out, that might not actually be the case. And to understand why, let's take a look at what options companies have to protect your passwords and safely store them so that even when hackers get access to their systems, your password stays safe. There are three ways a company can store your password. They can store it in plain text, use encryption on it, or use what's called a hash function. Let's go quickly over each one of these, and let's start with the most basic one,
plain text. This is obviously the most dangerous way of storing passwords. If hackers breach the company's database, they get to see all the passwords of the users. And since a lot of people have the bad habit of using the same password for multiple accounts, it's likely that one compromised password could lead to more compromised accounts. Now, you might think that companies aren't silly and that none of them store our passwords in plain text. However, you would be very wrong in thinking that. Past breaches have showed us that top companies with millions of users weren't adequately protecting passwords. A possible alternative to plain text storage is encryption. You take the password of the user and, before you store them, encrypt them with an encryption key. This would prevent hackers from obtaining the real password of users, but it's still quite risky. Underneath the encryption layer is still a plain text password, and so if an attacker manages to steal the encryption key as well, he can unlock all the passwords. The problem with encryption is that it is designed to work in two ways. You can encrypt the user's password to keep it safe, but you can also decrypt it to reveal the password again. Encryption is very practical when you want to share data in a secure way, but not great if you want to prevent hackers from breaching your password. And that brings us to the third technique of storing passwords, and that's by using a hash function. How does that work? Well, a hash function takes an input that could be a piece of text like your password, or it could be a file, and it turns that into a string of text that always has the same length. There are many different hash functions available, but this is what the SHA-3 hash of hello world looks like. Hash functions are very different from encryption because they only work in one way. You can calculate the hash of a password, but you cannot take a hash and turn it back into the original data. And that is an interesting property to have. By using hashes, companies can verify that you're logging in with the correct password without having to store your actual password. However, they aren't perfect either. Most hashing algorithms are optimized for speed. The more hashes per second they can calculate, the better. And that makes them vulnerable against brute force attacks. By simply calculating every hash of every possible password, an attacker can reverse the hash function. A modern GPU can do this with a speed of 292 million hashes per second. So it's only a matter of time before a hashed password is cracked using this technique. And if that's not fast enough, hackers can also use rainbow tables to further accelerate the process. These are lists of pre-computed hashes that can be used to quickly find weak and commonly used passwords. The speed of a hash function is a positive thing in certain areas. However, when it comes to storing passwords, you don't want this property. And then there is a second problem, and that happens when users share the same password. If both Alice and Bob have the password QWERTY, the hashes of their passwords will be identical. So when a hacker cracks the hash of this password, he also knows the other. Now, you might think that's not a big deal because it's very unlikely that different people will use the same password. Well, think again. The password QWERTY has been found more than 3 million times in data breaches. To make matters even worse, here's the top 10 most used passwords in 2017. Not the strongest of passwords. To defend against these types of attacks, we can add what's called a salt to the password before we hash it. The salt is just some random data, but it ensures that the hash of your password will always be unique, even if others use the same password. So if Bob and Alice both use the password QWERTY, their hashes will be completely different. So if an attacker cracks Bob's password, he can't link that password to Alice, and he has to start his cracking attempts all over again. This technique prevents hackers from cracking a bunch of passwords in one go. It makes the brute force attack slower, but still very much possible. So to solve this, we have to take a look at another technique, which is using a special hash function, which is deliberately being slowed down. Example of these are bcrypt, scrypt, or argon2, and they completely neutralize brute force attacks. These algorithms take a password as input along with a salt and a cost. This last one is very interesting. The cost defines the number of rounds the algorithm goes through, and this effectively slows it down. Now, over time, our computers become faster, and so brute force attacks against these algorithms becomes easier. And that's because they can simply try more combinations in a shorter time span. All we have to do to counter this is increase the cost parameter so the algorithm remains resistant against these types of attacks. Pretty genius.
So those are the three options that a company has to store and protect your passwords. But why settle for just one method if we can use multiple? You can't be greedy enough when it comes to security. This multi-layer protection is used by Dropbox, for instance. They take your password and start by running it through a simple hash function without salt. This is their first line of defense. They then take the hash and run it through the bcrypt algorithm with a salt and a cost of 10. This prevents brute force attacks. And finally, the resulting hash is encrypted with the Advanced Encryption Standard, or AES for short. The encryption key for this is not stored in their database, but is instead kept separately. So if an attacker breaches the Dropbox database, they will have to peel away each protective layer around your password, and that will take a lot of time. In fact, the cracking attempt would likely be more costly than what they get in return for compromising your account. So time for a conclusion then. If your account has been compromised, it's best to change your password immediately. However, depending on the security measures of the company that was compromised, it might be possible that hackers haven't been able to retrieve your password. And that's thanks to the magic of hash functions and cryptography in general. So now you know how companies can safely store your passwords. That was it for this video. If you learned something from it, hit the thumbs up button and consider getting subscribed. And as always, thank you very much. हुआ कुछ क्लियर हुआ? 3 तरीके Yes, sir. के यूज होते हैं, देखा आपने? केवल आप सिमेट्रिक की यूज करते हो, केवल उतना ही नहीं है, या असिमेट्रिक की जो हम यूज करते हैं उतना ही नहीं है. हैशेस जो है वो शिफ्ट की यूजेस की वजह से भी नए बनाए जाते हैं, है ना? जैसे इसमें एग्जांपल लिखाया था कि क्वाड्री जो वर्ड है एलिस ने भी भेजा उसका इंक्रिप्शन और उसने भी भेजा बॉब ने भी, बट दोनों का शिफ्ट के थ्रू क्या हुआ, चेंज हो गया, है ना? हाँ सर. राइट. ओके, सो ये तो मैंने हैशेस के फॉर्मेट तो बता दिए, MD5 बता दिया आपको, बैश ये वाला ही बता दिया, है ना? 64 पे. ओके, लास्ट है आपका जिसमें हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर. आपने डिजिटल सिग्नेचर सुना है ना? तो लेट्स सी द वीडियो ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. Okay, sir. Digital signatures. Digital signatures are one of the main aspects of ensuring the security and integrity of the data that is recorded onto a blockchain. Similar to the handwritten signatures of the physical world, digital signatures are used to bind a person or entity to digital data. To understand how a digital signature is created, let's suppose that Bob wants to send a digitally signed document to Alice. To illustrate this example, we will use a document to be certified, a hash algorithm, a digest based on the content of the document, a public key, a private key, and its algorithms. Bob has two keys appearing in the form of random numbers and letters, a private key and a public key. A private key should always remain private, but in order to digitally sign a document for Alice, Bob needs to share his public key with her. She will need it later on to verify the authenticity of the document and the signature. When the document is sent, its content is run through a hashing algorithm. The algorithm creates a unique array of numbers and letters called a digest. The digest is then encrypted with Bob's private key, which finally outputs the digital signature of the document. A digital signature is a combination of the content of the document it certifies and the author's private key. But how can Alice verify the authenticity of the document? Any variation in the content of the document or in Bob's private key would create a different signature. So, Alice can use the document and its digital signature to reverse the process and verify its legitimacy. Alice can run the document through the same hashing algorithm that Bob used previously, which will output a digest. If the document is untampered, the digest should be exactly the same. Additionally, as Bob ran the digest through his private key algorithm to create the digital signature, Alice can decrypt the digital signature with Bob's public key algorithm to also get a digest. If the signature is untampered, the digest should also be exactly the same. Finally, Alice will have two digests,
one based on the digital signature and the other one based on the content of the document. If both digests match, then Alice can be sure that the message hasn't changed in transit and verify that Bob is actually the author. It is in this way that the digital signatures are one of the key parts of securing data on a blockchain and guaranteeing immutability. समझ में आएगा इस डिजिटल सिग्नेचर के बारे में? यस सर। ठीक है, अब इसमें आपका बस लास्ट टॉपिक बचता है, वो क्या है आपका ऑटोमेटेड टूल। ठीक है, तो ऑटोमेटेड टूल आप यूज कर सकते हो। कौन सा टूल है? हैशकैट टूल है। हैशकैट टूल आपका सबसे पहले समझो क्या करता है। इट इज द वर्ल्ड फास्टर एंड मोस्ट एडवांस पासवर्ड रिकवरी टूल। ये क्या करता है? सबसे पहले आपको इसमें क्या देना पड़ता है? हैशेस फाइल देनी पड़ती है, मतलब ऑलरेडी जो जनरेटेड हैश फाइल होती है हम वो इसे प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस टूल इज बेसिकली वर्किंग ऑन द जीपीयू सिस्टम। ये आपके केवल जीपीयू पे काम करता है। अगर आपका सिस्टम का जीपीयू नहीं है, ग्राफिक का नहीं है, तो डोंट ट्राई टू रन दिस टूल, अदरवाइज आपके सिस्टम से धुआं निकलना कंफर्म है। ठीक है, तो अगर आपका जीपीयू है जो कि आपका जीपीयू जो है लाइक 130 1030 ना हो, एटलीस्ट 150 हो, तो अगर आपके पास उसका जीपीयू पड़ा हुआ है, किसका? एनवीडिया का या फिर एएमडी का, आप इसको यूज करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, तो कमांड देख लो हैशकैट -m। m क्या बताता है आपको कि किस टाइप का आप अटैक करने वाले हो, यानी टाइप ऑफ अटैक आपको बताएगा। उसके बाद 0 क्या बताएगा? MD5 हैशेस हैं। ठीक है, -a आपको बताता है अटैक मोड क्या यूज करना है। तो अटैक मोड हम 3 यूज कर रहे हैं, यानी कि ब्रूट फोर्सिंग अटैक मोड यूज कर रहे हैं। हैशकैट फाइल आपको लेनी है और उसके बाद डिक्शनरी फाइल लेनी है जिसमें से वो चेक करेगा। ठीक है, इसी को अगर आप सेव करना चाहते हो तो आप इस तरीके से अलग से फाइल लेके आपने hash.txt फाइल बना ली जिसके अंदर हैशेस है कुछ, और दूसरे में आपने क्या किया? doc2.txt से उसको मैच करा दिया। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड बेटर हो। So guys, this is all about the cryptographic thing. Clear है? Yes sir. ओके सर। तो guys, ये आपका लास्ट टॉपिक था, तो आज हमारा ये फिनिश होता है। ठीक है, एंड सर आईओटी वगैरह नहीं करेंगे? आईओटी वगैरह के लिए देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर चाहते हो तो कल कर लेंगे, वरना आईओटी वगैरह में कुछ ऐसा खास है नहीं करने के लिए। और सर क्लाउड कंप्यूटिंग